Good morning, students. Today we are going to see incomplete records remaining questions. I hope you have completed last session mein all past examination questions, or if you are not completed, it's okay. But at least try to watch all sessions of batch number 5 for incomplete records. Friends, incomplete records mein what is important thing that you have to find out balancing figures, and balancing figures, to know understand balancing figures you need the pro forma, ledger accounts pro forma. So today we are going to see, I will ask you some balancing figures कि इसकी balancing figure क्या होगी. I will open some ledger accounts for you and I will take some ledgers and I will ask you to find out balancing figure. Okay, I want particulars, not amount. Amount is not possible. So I want particulars. तो चालू करते हैं आज का सेशन. Before starting any sessions, as you are aware, we will first call basic rules of accounts. So basic rules of accounts, traditional and personal. Traditional accounts is divided into 3 parts. Number 1, personal account, that is due relationship and receiving giving relationship. Due relationship talks about debit the debtor, credit the creditor, and debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out, and normal with your basic session. चलो तो अभी आपका बेसिक आज चालू करते हैं. First, I will ask you ledger accounts के yes pro formas. Now you have to tell me what is the balancing figure. चलो ठीक है. Debtors account. Tell me what is the balancing figure. To balance brought down by cash, by bad debts, by sales return, by discount, by bills receivable, by balance carried down. So what is the balancing figure? Chalo. Yes, beta Nanesh, this is last session for practical and day after tomorrow we are going to start with. Yes, so balancing figure, I got the answer from Jyoti. Very good, beta. So sales is a balancing figure. Very good. If you want, you can take, you can write this in your 100 pages notebook, ledger pro formas. So ledger pro formas, जल्दी से आप लोग लिख सकते हो. वेरी गुड. सेल्स लिखा. अभिषेक पांडे, परचेस. डेटर अकाउंट बेटा परचेस होता है. अब ये मेरे लिए भी शॉकिंग था अभिषेक जी. ऐसा मत कीजिए बेटा. सीए, टेक इट वेरी सीरियसली because we are at the end of this session. Today is the last day of practical one. And day after tomorrow we are going to start with accounting standards. So please beta be sincere for your CA course. मतलब मुझे ये शॉकिंग था कि आप परचेस बोल सकते हो. बाद में आपने आंसर बदला. नो डाउट इन दैट. बेटा मुझे ये उम्मीद नहीं है. मैं आपको पहले ही बोल देता हूं. उम्मीद नहीं है कि आप स्टूडेंट्स ऐसे कुछ आंसर्स दोगे. चलो नेक्स्ट वन. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा. एक्सपेंसेस. नाउ यू ओनली टेल मी द प्रोफॉर्मा ऑफ एक्सपेंसेस. चलो जल्दी से एक्सपेंस का प्रोफॉर्मा आप ही मुझे बता दो. चलो यस फास्ट. एक्सपेंस का प्रोफॉर्मा बता दो.
यस बेटा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हम लोग लेने वाले। आप बोलोगे वैसा चलेगा बेटा अब्दुल भाई। आप बोलोगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ले लो तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और मेन पॉइंट्स मैं आपको लिख के दूंगा। यस बेटा ज्योति, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर डेबिट में भी आएगा। वेरी गुड। सो दिस ज्योति मोहम्मद जी, ये मेरे बहुत फाउंडेशन से मुझे दिख रहे कि ये मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे, तब जाके ये इतना फास्ट बता रहे। वेरी गुड। सो दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज बेटा ये प्रोफॉर्मास लिख लो और ट्राई टू टेल मी द प्रोफॉर्मा ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंस का अकाउंट का प्रोफॉर्मा जल्दी से मुझे बता दो। सबसे बढ़िया आलोक ने बताया, टू प्रीपेड बाय पेएबल टू कैश बाय पे एंडल टू पेएबल एंड बाय प्रीपेड। यस बेटा आलोक, यू आर वेरी सिंसियर बेटा। टू प्रीपेड बाय पेएबल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। टू कैश बाय पी एंड टू पेएबल एंड बाय प्रीपेड। वेरी गुड बेटा आलोक। चलो एक्सपेंस तो हो गया, अभी आते हैं बिल्स रिसीवेबल के प्रोफॉर्मा में। बिल्स रिसीवेबल का प्रोफॉर्मा है, यस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलो रिमेनिंग पार्ट यू ओनली टेल मी। बिल्स रिसीवेबल का प्रोफॉर्मा यू ओनली टेल मी। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, बिल्स रिसीवेबल का प्रोफॉर्मा बताइए। चलो जल्दी से बताइए बिल्स रिसीवेबल का प्रोफॉर्मा। एंड इफ पॉसिबल बेटा ट्राई टू अटेंड ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेशंस इन लाइव। है ना बेटा, मैं पहले ही बोल देता हूँ लाइव में ही अटेंड करना ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर समथिंग विच इज इट्स अ बोरिंग पार्ट। आपके साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आप बाद में भी देख सकते हो, यू विल एंजॉय। बट प्रॉब्लम इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ बेटा इतना लेक्चर बड़ा होता है कि बाद में बहुत बोर होता है एक अकेले देखने से, और आप कम्युनिकेशन करते रहोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगा। ओके, कैश फ्लो में मैंने 5 बार लिखने को बोला था। ओके ओके ओके, वेरी गुड। टू डेटर्स बाय बैंक और कैश बाय क्रेडिटर्स इफ एंडोर्स, एंडोर्स किया तो, एंड बाय डेटर्स इफ डिसऑनर। बाय डिस्काउंट भी हो सकता है, बाय बैंक एंड डिस्काउंट, बाय बैंक प्लस डिस्काउंट भी हो सकता है। इफ बेटा, इफ डिस्काउंटेड विद बैंक, बाय बैंक एंड डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट भी हो सकता है। मोहम्मद भाई एक ही बार भेजो यार आंसर। क्रेडिटर्स का एग्जैक्टली रिवर्स होएगा। चलो फाइंड आउट क्रेडिटर्स मिसिंग फिगर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स अ क्रेडिट प्लस, सो बाय परचेस टू परचेस रिटर्न टू बिल्स पेएबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डेफिशिएंसी। So better find out missing figure to balance carried down. So what is the missing figure? Yes, creditors का missing figure क्या है बताइए। To bank, very good, I got the answer। To bank, to bank is a missing figure creditors का। Bills payable, what is missing figure, tell me। By creditors to bank to balance carried down, by creditors to bank to balance carried down। So what is the missing figure? Very simple question। Yes,
व्हाट इज अ मिसिंग फिगर? चलो जल्दी बताओ. Yes, who answered very fast? Alok. Buy balance brought down. Buy balance brought down is a missing figure. अब्दुल को आंसर नहीं देने आज लगता है. थक गया लगता है अब्दुल अभी. सीए पढ़ पढ़ के थक गया है. लास्ट वन. asset account to balance brought down by sorry, to bank account, by bank, by loss, to profit, by balance carried down. Tell me missing figure. Tell me missing figure of asset. Tell me missing figure of asset. Very good. Sri Lakshmi answered very fast, and Jyotisha by depreciation or accumulated depreciation. By depreciation or accumulated depreciation. Chalo. So pro forma is over. Now let's start with our basic question answer session. हो गया है. Yes. By cash. नहीं रे बेटा खुशी. Not by cash. बाय कैश कैसे चलेगा बेटा? बाय डेप्रिसिएशन ना. बाय बैंक और कैश एक ही होता है. खुशी इंप्रूव योर बेसिक्स बेटा. यस. चलो अभिषेक पांडे ने आंसर अभी करेक्ट दिया. थोड़ा सुबह सुबह एक डोज देना पड़ता है क्या अभिषेक? चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सी calculate the average collection period from the following details by adopting 360 days in a year. So ICAI itself has given you 360 days in a year. So write down beta answer. June 2014 में आया था for 2 marks only. Average inventory 10,80,000. Okay, so average inventory is given. GP ratio. Now what is GP ratio? GP upon sales. Data 6,90,000. Credit sales to total sales 20%. Inventory ratio 6 times. Now beta inventory turnover ratio. Write down by red pen. Inventory turnover ratio is equal to, see, this is called as composite ratio. Composite का meaning होता है mix ratio. Composite oblique mix ratio. Inventory word is in beta balance sheet, and turnover word is in, turnover means sales, or here you can consider it that cost of sales, because inventory is recorded cost or NRV, whichever is lower. So inventory turnover ratio में turnover का meaning होता है cost of sales, and if it is not available then beta sales. If it is not available then sales. So first priority is cost of sales. So in this question you can easily find out cost of sales. So इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, टर्नओवर वर्ड ये ऊपर आएगा एंड इन्वेंटरी वर्ड नीचे जाएगा. नाउ एवरेज इन्वेंटरी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, एवरेज इन्वेंटरी, और ये नहीं रहेगा तो क्लोजिंग इन्वेंटरी. So if you do not have the figure of average inventory, then you may consider closing inventory. So this is a formula. Okay. In financial management, you are going to understand these all formulae. Okay. So financial management में आप सभी formula ये समझ लोगे. So don't worry. So cost of sales oblique sales upon average inventory oblique closing inventory. ये इसका formula होता है. So formula is very easy. Cost of sales oblique sales divided by average inventory oblique closing inventory. Depending on the, you can apply this formula and you'll get the answer. So I think
Okay. Average inventory we have, and inventory ratio is 6 times. So 6 times. So now I can find out cost of sales, and average inventory I have 10,80,000. So you can write answer. Step 1, calculation of cost of sales. Step 1, calculation of cost of sales. Therefore, cost of sales is equal to, yes, what is cost of sales? 10,80,000 into 6 times 64,80,000. Step 2, calculation of sales. GP ratio is equal to 10%. GP 10% means cost of sales, GP sales. Now cost of sale, GP ratio is always on sales. So cost of sales is 90. If 64,80,000, then sales is equal to, so sales is equal to 64,80,000 into 100 divided by 90. It's a cross multiplication, 72 lakhs. 72 lakhs. So step 2, you are going to find out calculation of sales. So first one is cost of sales, second one is sales. Step 3, write down. Step 3, credit sales. Credit sales. 20% of total sales. Credit sales is equal to 20% into total sales. So 20% into 72 lakhs. So credit sales is equal to 72 lakhs into 20%, 14,40,000. And step 4, average collection period. See how to calculate this. Credit sales is always for 360 days, for year. Okay. And debtors for how many days? It is called as average collection period. Average collection period. Credit sales 14,40,000 and debtors 6,90,000. $172.5. 172.5 days. Step 4. Average collection period.
इजी છે? Question 3 easy, 4 easy છે? Yes. Question 5. But question 5, now you find out the answer. Creditors balance means credit. Credit purchases, credit में लिखेंगे creditors के. Bills payable accepted debit. Cash paid debit. Bill endorsed to creditors. Bill endorsed to creditors is creditors to bills receivable. Debit. Endorsed bill dishonor, creditors will get जिंदा वापस रीओपन होगा. So creditors के credit में by bills receivable dishonor. Bills receivable dishonor बेटा. Bills receivable dishonor की एंट्री इसमें नहीं आएगी because it is debtors to bills receivable. Debtors to bills receivable. Purchase return debit. Discount received debit. And transfer from debtors ledger debit. Okay, debtors ledger means creditors to debtors. Debtors भी कम करने, creditors भी कम करने. मतलब जो debtor था वही creditor है. तो बेटा मुझे आपसे 100 रुपया लेना है और आपको 20 रुपया देना है. तो I will give you 80 rupees. So it is called as बेटा लेन देन. Okay. So 100 payable and 20 receivable ऐसा हो जाएगा. So creditors will get reduced. कितना टोटल आ रहा है चेक करो and give me the balancing figure. बेटा ये बिल्स पेबल डिसऑनर है. मेक द चेंजेस. बिल्स पेबल डिसऑनर है. ये बिल्स पेबल डिसऑनर है, नॉट बिल्स रिसीवेबल. सो दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा. बिल्स पेबल डिसऑनर है वो, तो क्रेडिट ही करेंगे. नाउ टेल मी द बैलेंसिंग फिगर. टेल मी बैलेंसिंग फिगर. So what is the balancing figure? To balance carried down. ओके सॉरी, बैलेंसिंग फिगर कितना आया? $71,000. Sri Lakshmi, what is transfer from debtors ledger
ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स मीन्स बेटा डेटर्स से क्रेडिटर में आया तो डेटर्स को डेबिट बैलेंस होता है. सो डेटर्स हैज डेबिट बैलेंस, इट वी विल गिव क्रेडिट, एंड क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस वी विल गिव डेबिट. सो सपोज इफ यू आर डेटर ऑफ ₹20 and I am creditor, I will receive money from you ₹20 and I have to pay you money ₹5. So now instead of debit credit, okay, instead of giving you 20 and taking from you ₹5, I will do the net calculation, and that's why my creditors and debtors will get reduced. Okay, it is called as transfer from debtors ledger. It is called as transfer from. So you are debtor and you are creditor for me. Okay, so this is called as you are also debtor and creditor. Okay, so I hope you understood it now. हाँ बेटा, समथिंग डिफरेंट हो सकता है. इट्स नॉट लाइक कि सेल्स ऑलवेज, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है ना. फॉर एग्जाम्पल सपोज I sold you goods beta of ₹100 and you suppose you I am a CA person, assume I am a CA, assume नहीं है ही है, हाँ. तो suppose and आप तो एक shopkeeper, so you sold goods to me and at the same time I'm providing you some services of CA. Okay, so you sold goods me for ₹1 lakh and I'm providing you in services of ₹20,000. It might happen ना. तो यस, सो 80,000 ही मुझे आपको पे करना पड़ेगा. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ. छोटे क्वेश्चंस हो गए. क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं आज. May 2015. The following balance sheet of Messrs Care Traders Limited. Okay, so Messrs Care Trader Limited की ये बैलेंस शीट है. Sources of funds: share capital, profit and loss account, unsecured loan at the rate of 10%, trade payable, application of funds. So beta sources means beta कहां से पैसा आया, it's a liability side, and application means asset side. A fire broke out in the premises of 31st March 2015 and destroyed the books of accounts. Maximum questions I will try to cover. Okay, remaining questions you can do as homework because it's not possible to take all questions of this chapter. So जितने हो सकते हैं उतने मैं कवर करता हूं. A fire broke out in the premises on 31st March 2015 and destroyed in the books of accounts. The accountant, however, provide you the following information. Sales for the year ended 31st March 2014, 18,60,000. The current year sales 20% higher than the last year sales. So last year के sales से current year sales plus 20%. So this is 22,32,000. 25% of sales in cash. So 22,30,000 into 25%. So cash sales is 5,58,000. And credit sales is 16,74,000. 80%, 75%. 16,74,000. So 16,74,000 ये आपका क्रेडिट सेल्स होगा. जीपी ऑन सेल्स इज 30%. तो जीपी ऑन सेल्स कितना है? 30%. सो जीपी अपॉन सेल्स, तो मेरा जीपी कितना आ जाएगा? 22,32,000. You can write it over here. 22,32,000 into 30%. So my GP will be 6,69,600. Debtors 2 months. So बेटा debtors 2 months मतलब देखो, क्रेडिट सेल्स पूरे 12 महीने का होता है. क्रेडिट सेल्स इज फॉर 12 months. तो डेटर्स 2 months. So क्रेडिट सेल्स कितना है? 16,74,000
So I can easily find out 16,74,000 into 2 divided by 12. So this is 2,79,000. And creditors 1 month. All creditors paid by check and all credit sales are collected by check. So here cash and bank account you have to prepare separately. Cash and bank account you have to prepare separately. The bank passbook, machinery purchase. So asset account debit to bank. Assetच्या डेबिटला बँकेच्या क्रेडिटला. रेंट पेड, रेंट टू कैश. रेंट P&L में डेबिट देंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे. सेम थिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट डेबिट इन P&L, बैंक को क्रेडिट. सेम थिंग फॉर this P&L debit and bank credit. In P&L we will give debit, bank credit. Sale of furniture. Sale of furniture 9,500. So bank को debit, furniture को credit. I think furniture account is there. So star mark bank account is there. Debtors we have to open. Then machinery purchase. So machinery we have to open. Line by line जाएंगे. Trade payable we have to open. Machinery was purchased on 1st October. So 6 months का depreciation. 6 months depreciation. Rent was paid for 11 months. So rent paid is for 11 months. So 1 month ka payable means 1 month payable. So I will open rent account. It will be easy. Rent account easy होगा open करना. Then advertisement expenses related to next year 25%. So 75% current year, 25% next year. So 80,000 into 75%, 60,000 in P&L and 25% advertisement uska 20,000 is in next year. Okay. Physical verification. Acha. Furniture was sold for 2,900 ka at a loss of 2,900. So my book value is equal to 9,500 plus 2,900. So 9,500 plus 2,900. My furniture value is 12,400. So loss को debit, P&L में debit देंगे loss को and furniture के credit में. Physical verification 1,81,000 and petty cash balance is nil. So पूरा का पूरा petty expense कर दिया. So I will open petty cash account if you want. Cash withdrawn, petty cash account open करेंगे. Star mark. Then furniture तो है ही. Depreciation 10% and 20% on furniture. 10% and 20%. And furniture sold on 1/4/14. 1/4/14 means there is no depreciation. There is no depreciation on assets sold. On assets sold. So let's start. Yes, beta easy question hai. Missing figures we are not aware.
मिसिंग फिगर्स हमें पता नहीं है. राइट डाउन. May 2015, in the books of Messrs. Care Traders, trading and P&L account for the year ended. Write down beta. For the year ended, and please be focused. 31st March 2015. Particulars rupees. Particulars rupees. After 6 lines total trading account, and P&L account beta. 10 to 12 lines. P&L account 10 to 12 lines. Balance sheet. एक सेकंड बेटा. हाँ, write down. Balance sheet as on 31st March 2015. Liability rupees. Asset rupees. Liability rupees, asset rupees. Working note 1. Trade payable. 5 lines. 6 lines. Trade payable. Working note 2. Machinery account. 6 lines. Working note 3. Furniture account. 6 lines. Working note 4. Debtors account or trade receivable account. Working note 6. Sorry, 5. बड़ा बैंक अकाउंट हम लोग बड़ा ओपन करेंगे.
So working note 5, rent account. Working note 6, advertisement expense account. And one more working note, petty cash account and bank account. Bank account half page beta. Bank account half page and petty cash account. So write down bank account half page. Draw fast. Bank account and working note 8. So here receipt rupees, payment rupees. And last working note 8, petty cash account. Petty cash account. Eight working notes. Draw fast. Chalo. Start. Over formats. चलो लाइन बाय लाइन चलिए, सामने क्वेश्चन रखते हैं. Share capital, we will write it as same.
बेटा कैपिटल लिखो. एक्चुअली मेसर्स का कभी शेयर कैपिटल नहीं होता. इट्स अ रॉन्ग थिंग. सो कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट, ₹10 lakhs. Next, P&L account inner side, opening balance 147,800. Unsecured loan, unsecured loan 1,75,000. Beta 10% interest is hidden. 10% interest is hidden. So we'll do it at the end, hidden ka adjustment. Trade payable. Trade payable. Buy balance brought down 45,800. $45,800. Machinery account, to balance brought down 8,25,500. 8,25,500. Machinery account. Furniture account, to balance brought down 1,28,700. 1,28,700. Inventory, to opening stock opening stock 1,72,000. Trade receivable, to balance brought down 2,29,600. Then bank balance 12,800. $12,800. Next, over. चलिए, sales for the year. So sales we have divided in two parts, by cash and by credit. So trading and P&L account के credit side में आ जाइए. Trading and P&L credit side, by sales, cash, credit, total is 22,32,000. Out of this, cash is 5,58,000. And 16,74,000. 74,000. Cash means बैंक के डेबिट में टू सेल्स 5,58,000. बैंक के डेबिट में टू सेल्स 5,58,000. And second effect,
डेटर्स के डेबिट में 2 sales 16,74,000. 16,74,000. Next, GP 6,69,600 to gross profit 6,69,600 carried down, and by GP brought down 6,69,600. Next, debtors 2,75,000. Debtors 2,70,000, sorry, 5 या 9, 2,79,000, sorry, 2,79,000. So debtors on the asset side, debtors 2,79,000, and buy balance carried down 2,79,000. How we calculated, you know already. So debtors calculation 2/12. Creditors pending, creditors के सामने लिखो pending. The bank passbook shows following balances. Machinery purchase. So machinery to bank. Machinery के डेबिट में to bank 1,14,000, and बैंक के क्रेडिट में सेकंड लाइन बाय मशीनरी 1,14,000. 1,14,000. Have patience till last minute. बेटा पोस्टिंग में मजा लेनी चाहिए. एंजॉय यूर पोस्टिंग. बर्डन मत लेके मत कीजिए. एंजॉय कीजिए. पोस्टिंग पार्ट को एंजॉय कीजिए. रेंट पेड टू बैंक. सो आई विल राइट ओवर हियर. पहले मैं पूरे इफेक्ट्स दे देता हूं. बाय रेंट 1,32,000. सेकंड इफेक्ट आई विल गिव इट लेटर. बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, by advertisement expense 80,000. By traveling expense, traveling expenses 7,800, for which checks were issued but not presented. So beta 78,400 check issued kiye hai but not yet presented, means we will add this. Okay, so traveling expense, red pen, check issued but not presented. Bank balance will decrease as per cash book. As per cash book, your bank balance is going to decrease. Remember. So traveling expenses, red pen adjustment hai, plus 7,800. This is important adjustment. Traveling expenses, IMP mark karna. So traveling expenses is an important adjustment. 78,400 plus 7,800.
by repairs, by repairs 36,500. ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना हुआ रे? 78,400, 78.4 plus 7.8, 86.2, 86,200. Okay. Next, sale of furniture to furniture 9,500. एक ही मिनट बेटा, सिर्फ एक ही मिनट, मैं से पानी का बॉटल लेके आता हूं. टू फर्नीचर 9,500. यस बेटा, टू फर्नीचर 9,500. कैश विड्रॉन, बेटा एक और अकाउंट निकालेंगे कैश विड्रॉन के बाद. सो पेटी कैश, ओके इधर लिख दो, बाय पेटी कैश, by petty cash 28,300, 28,300 and by interest, by interest बेटा इंटरेस्ट का एक अकाउंट बना लेंगे, इंटरेस्ट का भी अकाउंट बनाएंगे 8750. इंटरेस्ट अकाउंट वर्किंग नोट 9, इंटरेस्ट अकाउंट. चलो नाउ गिव सेकंड इफेक्ट फटाफट. चलो सेकंड इफेक्ट देते हैं अभी. टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर बेटा, टिल नाउ नथिंग इज डिफिकल्ट अभी तक पूरा का पूरा. एंड प्लीज बी विथ मी, जो भी मैं बोल रहा हूं यस जल्दी से लिखने की कोशिश कीजिए. इन रिकॉर्डेड सेशंस ऑल्सो, दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग इट इन रिकॉर्डेड, ट्राई टू फिनिश इट विथ मी. ओके, और मेरे साथ पोस्टिंग करने का. और प्लीज गिव सेकंड इफेक्ट का दिमाग में रखिए. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज द सेकंड इफेक्ट. ओके, एवरीथिंग इज गिवन, सो एंजॉय दिस क्वेश्चंस बेटा. दीज आर रियली वेरी इजी क्वेश्चंस वंस यू गॉट द फ्लो. और फ्लो आना बहुत जरूरी है. एंड कंप्लीट प्रैक्टिस 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 फॉर दिस क्वेश्चंस. बहुत प्रैक्टिस लगती है ये क्वेश्चंस को. चलो नाउ सेकंड इफेक्ट. मशीनरी के डेबिट में टू बैंक आई थिंक गिवन है. मशीनरी के डेबिट में टू बैंक गिवन है. नहीं, रेंट पेड बेटा, रेंट पेड. सो रेंटच्या डेबिटला टू बैंक 1,32,000 is of 11 months and you can write two payable also. नहीं तो भूल जाते हम लोग. 1 month, two payable 1 month. So 1,32,000 divided by 11 into 1, 12,000. And where to give second effect of this? Where to give two payable का second effect? Balance sheet liability side. Rent payable 12,000. Rent payable 12,000. Easy है. So rent payable on the liability side. Rent payable on the liability side. Advertisement expenses beta. To bank 80,000. उसमें से बाय P&L करंट ईयर, बाय P&L करंट ईयर एंड बाय प्रीपेड 25%. सो
प्रीपेड कितना था? 20,000 and P&L में 60,000. So this account is getting tallied. 80 advertisement expenses. So second effect तुरंत दे दीजिए. Advertisement expenses P&L के डेबिट में 60,000 and asset side prepaid advertisement 20,000. बेटा when you are solving it for the first time और मेरे सेशंस में when you are solving it you may find कि posting part is difficult one. Sir, how to get command over posting part? बेटा only practice. तो practice से ही ये 2-3 बार अपने आप से कीजिए. Self solving 30 minutes 20 minutes you have to take it for this chapter and then you will get this speed. Okay, sir के साथ you will find it's very easy. With sir it's very easy for you, पर बेटा खुद से करना ये बहुत जरूरी है ये चैप्टर में. सेल्फ सॉल्विंग. चलो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेटा P&L च्या डेबिटला रेड पेन टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस और ये चैप्टर उन्हीं को आता है जिनमें पेशेंस है. 86,200. नेक्स्ट repairs normal pen to repairs 36,500. next one petty cash चा डेबिट ला. पेटी कैश के डेबिट में टू बैंक 28,300 एंड इंटरेस्ट के डेबिट में टू बैंक 8750. Okay. Chalo. Machinery was purchased on 1/10/2014. So by depreciation for machinery, chalo machinery account में आओ. Machinery account. हाँ. By depreciation 8,25,500 पे 10% plus 1,14,000 पे 10% for 6 months. $88,250. Buy balance carried down. Buy balance carried down. Remaining balance 851,250. $939,500. Depreciation थोड़ा नीचे लिखेंगे. To depreciation, machinery and furniture. Machinery 88,250. Furniture weight
And machinery asset side, you can write now. Machinery account 851 250. 851 250 machinery account. कमी येतो. Rent over, traveling expenses over, furniture. अच्छा, फर्नीचर का इफेक्ट देना रहेगा या क्या? ओके सॉरी. बाय बैंक 9500 था. सॉरी, फर्नीचर का इफेक्ट देना रहेगा या? बाय लॉस 2900. And by depreciation 1,28,700 minus 12,400 into 20% ना. 23,260. 23,260. $1,11,510. 1,11,510. And what is the balancing figure? Balancing figure so by balance carried down, we will close this account. 128,700. $93,040. And furniture account, we will write it on the asset side. Furniture account on the asset side 93,040. Over. Chalo, big accounts over. Physical stock 1,81,000. So balance sheet asset side stock 1,81,000, or you can write inventory. And by closing stock 1,81,000. Next, there was no change in unsecured loan and depreciation. Acha. So petty cash का है, no petty cash balance. So by petty expenses, so whatever you incurred by petty expense, balancing figure, there is no balance. And second effect beta, to petty expense. To petty expense, P&L चा debit ला 28,300. Interest on loan is very important. So red pen by P&L, red pen by P&L. So what is interest percentage? 1,75,000 into 10%. 1,75,000. 17,500. 17,500. And to interest 17,500.
17,500. To payable, star mark, 8750, and interest payable 8750. Okay, so interest का over. चलो नाउ वन बाय वन अकाउंट क्लोज करते हैं. नाउ स्टिल परचेसेस अकाउंट बाकी है. यू कैन फाइंड आउट टू परचेसेस, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस इज नंबर क्लोजिंग. हा बेटा, अभी मैं पहले तो क्लोज कर लेता हूं. नंबर वन पे जो इजी है वो मैं बाद में क्लोज करता हूं. सुनो, सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू क्लोज इट. ट्रेड पेएबल पेंडिंग, मशीनरी ओवर, फर्नीचर ओवर, डेटर्स में अभी भी पेंडिंग है. रेंट क्लोज कर लेता हूं. चलो बाय पी एंड एल रेंट क्लोज कर देता हूं. 144 रेंट 144. तो पी एंड एल के डेबिट में 1,44,000. सो टू रेंट 1,44,000. रेंट ओवर. चलो रेंट को कंप्लीट कर दो. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ओवर, बैंक पेंडिंग, पेटी एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ओवर. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज फर्स्ट परचेसेस. नंबर वन पे परचेस क्लोज करो. 22,32,000 प्लस 181, 24,13,000 minus 172 minus 669.6. So purchases 15,71,400. 15,71,400. So creditors के credit side में buy purchases 15,71,400. Now two balance carried down. It's very important. 15,71,400 is for 12 months. तो 1 मंथ के लिए कितना? यू नो कि क्रेडिटर्स ये 1 महीने के हैं. क्रेडिटर्स इज फॉर 1 मंथ. सो परचेसेस फॉर 12 मंथ्स. तो क्रेडिटर्स कितने मंथ्स का? डिवाइड बाय 12. सो क्रेडिटर्स इज 1,30,950. दिस इज नंबर 2. दिस इज नंबर 3. रेड पेन से नंबर 3 130,950. Number 3 पे 130,950. Now you can take a total and you can write to bank. Number 4 पे 45.8 plus 1571.4. So this is 16,17,200 minus 130.95. 14,86,250. बैंक के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स कौन सा नंबर था रे? ओ सॉरी, दिस इज 5 नंबर. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पे 4 नंबर था. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड 4 नंबर. टू बैलेंस कैरिड डाउन 4 नंबर पे आएगा. 1,30,950. हाँ, एंड टू बैंक 5 नंबर है ये. दिस इज 5 नंबर. 5 नंबर एंड बैंक के क्रेडिट साइड में 6 नंबर
14,86,250. 14,86,250. 7 नंबर पे डेटर्स क्लोज करता हूं बाय बैंक. 7 नंबर स्टार मार्क. 229.6 plus 1674, 19,03,600, minus 279, 16,24,600. एंड बैंक के डेबिट में 2 डेटर्स 8 नंबर 16,24,600. Now close bank account. Buy balance carried down 9 number 12.8 plus 558 plus 9.5 plus 1624.6, 22,04,900 minus 114 minus 132 minus 80 minus 86.2 minus 36.5 minus 28.3 minus 8.75 minus 14,86.25, 232,900. 232,900. Please check this answer. 232,900. Are you getting the same figure? 9 number पे. Have patience. Have patience. Yes. Do correct posting. माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चंस. बेटा सीए बनना है अपने को. कुछ भी करके सीए बनना है. ओके. 232,900. वेरी गुड. यस. So बेटा बैंक बैलेंस एसेट साइड नंबर 10 232,900 and to net profit 669,600 28,300 minus 17,500 minus 1,44,000 minus 11,510. कितना आया नेट प्रॉफिट? यस टेल मी नेट प्रॉफिट कितना आया? $144, 1,60,000, 86,200, 28,300. ये लॉस लिखना रहेगा ना. टू लॉस ऑन सेल. टू लॉस ऑन सेल कैसे रहेगा यार? 2,900. चलो करो फटाफट. 669.6 minus 60 minus 86.2 minus 36.5 minus 28.3 minus 17.5 minus 144 minus 2.9 minus 111.51. यस कितना आया? 182,690 प्लस प्रॉफिट में ऐड कर दो 182,690 330
490 लॉस रह गया था मेरा लिखना. एंड चेक योर बैलेंस शीट इज टेलिंग और नॉट. $1657,190 वन साइड तो लग रहा है बराबर होगा. -851.25 -93.04 -279 -20 -181. Yes. 16,57,190 करेक्ट आया. चेक द आंसर. बड़ा लॉस ऑन फर्नीचर रह गया था. यस. शहीद कितने हो गए? टेल मी फ्रैंकली बेटा, कितने लोगों का मैच नहीं हुआ? टेल मी. इट्स ओके इफ यू आर नॉट मैचिंग, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. पर टेल मी कितने लोगों का मैच नहीं हुआ? माई स्पीड. आलोक बोल रहे हैं मैच हुआ है. चलो ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल चेक इट इन दी ब्रेक. तो हम लोग मिलते हैं अभी 8:30 को. ओके 8:35. चलो टेक 10 मिनट्स का ब्रेक. 8:35 को मिलते हैं. वन मोर प्रॉब्लम और टू प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व. बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. चलो सो टेक अ ब्रेक. चलो जल्दी से ब्रेक ले लीजिए. ब्रेक ले लीजिए.
Now tell me how many questions you want to solve. बेटा मोहम्मद असलम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप से फाउंडेशन एग्जाम है, आपकी एग्जाम है क्या? बेटा परचेसेस इज ऑन क्रेडिट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. All purchases are on credit basis. All purchases are on credit basis is given in the question. That's why. Second one, I want everyone, beta, please tell me. जल्दी से बताइए. से फाउंडेशन एग्जाम क्यों लिख रहे हो मोहम्मद असलम आप? और कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे? चलो. अरे ये क्वेश्चन गलती से इधर आया है. नवंबर 2015 का क्वेश्चन. आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास. ये एक्चुअली दिस इज चैप्टर 1 का क्वेश्चन है. ये चैप्टर 1 क्वेश्चन नवंबर 15 का जो है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये. November 15 में one more question is there. Okay. Okay. A company sold 20% goods. May 17. Anyone who has solved all these questions? इतना सिंसियर कौन है अपने क्लास में कि जिसने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए? यस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. Why? I know you already have pressures of other subject. Already you have to watch my previous sessions of incomplete records, study material questions. So yes, beta, in batch number 5, have I covered all questions of study material? Just asking you. I don't know exactly whether I covered all questions or not. तो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ आपको. बेटा आलोक, मुझे भी पता नहीं है बिकॉज आई ऑल्सो नॉट रिमेंबर कि एग्जैक्टली विच क्वेश्चन इज डिफिकल्ट आउट ऑफ दिस. तो मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है. तो आप लोग मुझे बताओगे तो अच्छा होगा. यस. तो जल्दी से बताइए. टीवाई के इजी गए. शिवा संस्कारी इज सेइंग कि सर यू मेड दिस चैप्टर इजी इन स्टडी मटेरियल के एंड दैट्स व्हाई टीवाई के क्वेश्चंस आर वेरी इजी फॉर मी. वेरी गुड. ओके. इलस्ट्रेशन 3 मजे लगा था. चलो ठीक है. सो लेट्स कंप्लीट दिस. यस, एनीवन हु हैज सॉल्व्ड ऑल दिस क्वेश्चंस पास्ट एग्जामिनेशन? नहीं ना, नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है. यस, ओनली 2 days वी गॉट फॉर दिस चैप्टर. नहीं बेटा प्रियंका, आप सिंसियर हो, डोंट वरी. तो आपने स्टडी मटेरियल भी सॉल्व किया, यही बड़ी बात है मेरे लिए. इतना नहीं उम्मीद रखने का नहीं क्या किसी के पास से कि भाई मेरा ही सब्जेक्ट दिन भर करते रहो. नॉट एक्सपेक्टेड. अच्छा, नवंबर 2022 का क्वेश्चन लीजिए. ठीक है. अ कंपनी सोल्ड 20% ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस. ये करवा लेता हूं. डेटर्स 1.5 मंथ्स है बेटा. ये 1.5 मंथ्स एंड देयर बैलेंस इज 1,25,000. सो स्टेप 1 से क्या निकालोगे? इज वेरी, अरे 4 मार्क के लिए. स्टेप 1
Calculation of credit sales. Write down. Calculation of credit sales. Credit sales for 12 months. So debtors for 1.5 months. तो क्रेडिट सेल्स कितना आएगा? डेटर्स इज बेटा 1,25,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1,25,000 for 12 into 12 divided by 1.5. So credit sales is 10 lakhs. Credit sales is 10 lakhs. Step 2, calculation of total sales. 2 marks मिल गए इसके. And calculation of total sales. Cash sales 20. Credit sales 80. Total sales 100. So credit sales के नीचे we are going to write 10 lakhs. So 10 lakhs into 100 divided by 80. 12,50,000. Total sales is 12,50,000. Should I take creditors velocity means 1.5 months? Let us see this question. और May 2016 question 8 marks का है. यदि you have solved any difficult question, you can tell me. I think this question is in study material. I think this question May 2017 is similar to study material. चेक करो स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है क्या. May 2017 क्वेश्चन इज स्टडी मटेरियल. चेक करो. चलो चेक इट फास्ट. बताओ मुझे जरा स्टडी मटेरियल का ये क्या. सेम क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल. ठीक है. टीवाई के 1 है. चलो तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ना. Hey, please you only tell me now difficult questions. I will take those questions. चलो आप लोग मुझे बताओ difficult questions. You give me a list of difficult question. चलो I am waiting for your difficult question list. हाँ चलो जल्दी से बताओ. So I will take accordingly. You just see all these adjustments and tell me difficult questions.
बेटा हो गया क्या देख के? बेटा प्लीज देख के बोलो। सर नवंबर 22 का लीजिए। चलो नवंबर 22, नवंबर 22 का लेता हूं। नवंबर 22 की डिमांड 2-3 स्टूडेंट से आई। इधर है। नवंबर 22 का क्वेश्चन ही नहीं है इसमें तो बेटा। वेलोसिटी मींस यस बेटा। आंसर आई विल सेंड, सुनो, आई विल सेंड यू द आंसर्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे जो आंसर्स है इज नॉट बाय यूजिंग माय टेक्निक, तो माइट भी थोड़ा डिफरेंट टेक्निक हो सकता है, बट यू विल गेट द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के फाइनल आंसर्स, सो डोंट वरी, मैं वो आपको भेज दूंगा। 13, 18 एंड 17, चलो। यस, 13, 18 एंड 17, आई थिंक 13 भी। थर्टीन मुझे नहीं लग रहा है डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा है मुझे। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं। जुलाई 2021 का क्वेश्चन करते हैं, चलो। अच्छा हाँ, अब्दुल का थोड़ा सर्च अच्छा होता है। टेक क्वेश्चन नंबर 10 में 17, चलो। अब्दुल थोड़ा बताता है तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। यस बेटा। बेटा दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन स्टडी मटेरियल में होगा ये क्वेश्चन। यस अब्दुल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टडी मटेरियल का ही है। चलो मेरे हिसाब से ले लेता हूं मैं। वन मोर क्वेश्चन। 10 मार्क का नहीं, 12 मार्क का कोई क्वेश्चन है क्या देखता हूं। ऑल क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। हाँ, मे 22 का ले लेता हूं, चलो। मे 22 का क्वेश्चन। मे 22 का क्वेश्चन लेता हूं, चलो। लेटेस्ट एग्जामिनेशन मे 22, क्वेश्चन नंबर 16। हम्म। स्टीव एंड एलिसिया जो भी है आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They maintain their books of accounts on single entry system. They maintain their books on single entry system on 31st March 2021 and 31st March 2022. The transactions during the year: collection from debtors, payment to creditors, expenses paid, drawings by Stevie, discount allowed, discount received. On 1/4/2021, equipment 40,000. So collection from debtors, cash के डेबिट में, डेटर्स के क्रेडिट में। ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। एक्सपेंसेस पेड पी एंड एल डेबिट, कैश क्रेडिट। ड्रॉइंग्स कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर्स डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट। सिंपल।
Okay. Equipment book value on 1/4/2021 was sold for 30,000. Loss 10,000. So P&L को debit 10,000, cash debit 30,000, and equipment credit 40,000. And 1/10/2021 some more equipment purchase, 6 months का depreciation. So you have to identify depreciation for 6 months. Cash sales 10% of total sales. Okay. And credit sales 9 lakh. So this is 90%. So cash sales will be 1 lakh, 10%. Okay. 90% 9 lakhs. So 10% 1 lakh. So cash के डेबिट में, कैश के डेबिट में, एंड ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और ये डेटर्स के डेबिट में एंड ट्रेडिंग के क्रेडिट में. क्रेडिट परचेसेस 80% of total purchase. So cash purchase is 20%. So 1,30,000 for 20% divided by 20 into 80. So 5,20,000. 5,20,000 credit purchase. Debit, trading debit, and this is also trading debit. और ये creditors credit 5,20,000 and cash credit 1,25,000. Cost plus 25%. So 100, 25, 125. We have sales figure 10 lakhs. So 25 के लिए कितना? So GP will be 10 lakhs divided by 5 or into 25 divided by 125. So GP will be 2 lakhs. GP कितना है? 2 lakhs. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो बेटा एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा. एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा. एक्सपेंसेस अकाउंट. And capital of Steve was 30,000, more than the capital of Alicia. Furniture का depreciation 10% है. And building 2%. अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आधा अधूरा है क्या? बैलेंसेस एक सेकंड ना, ये क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है. आई विल जस्ट चेक द क्वेश्चन. यस प्लीज डाउनलोड May 22 का क्वेश्चन बेटा. ओ सॉरी, बेटा कुछ ओपनिंग बैलेंसेस ही मैच नहीं है. ये क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा है. ओके, ओपनिंग बैलेंसेस आर नॉट देयर. एक सेकंड ना, ये क्वेश्चन अधूरा है. आई जस्ट हैव टू डाउनलोड.
डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे? ये डाउनलोड करके लेना पड़ेगा आपको। ये May 22 का क्वेश्चन है जिसमें बिल्डिंग इक्विपमेंट, चलो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बिल्डिंग जो था, या मैं डाउनलोड कर लूँ क्या? एक ही सेकंड ना बेटा, May 22 का क्वेश्चन डाउनलोड कर लेता हूँ एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो तब तक बना लो बेटा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। अरे यार नेट भी बंद है अभी तो। चलो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ फिर आपको। क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट मिसिंग था, बिल्डिंग। बिल्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऐसा लिखता हूं मैं। ओपनिंग 3 लाख 3 lakhs, क्लोजिंग भी, so there is no addition and this is before depreciation. Then equipment 4,80,000 and 5,44,000. Then you have debtors. Then you have creditors. Then you have stock. Then you have bank loan. And then you have cash. Debtors 50-50. Creditors question mark 2 lakhs. Then, सॉरी, फर्नीचर 50-50 है। फर्नीचर रहेगा या 50-50। डेटर्स क्वेश्चन मार्क एंड 2 lakhs। यू कैन राइट फर्नीचर आफ्टरवर्ड्स, एंड में भी लिख सकते हो। देन क्रेडिटर्स 130 एंड क्वेश्चन मार्क। स्टॉक क्वेश्चन मार्क 1,40,000, 90,000, 70,000 and cash 1,20,000 and question mark. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन। राइट डाउन। चलो साथ में सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हैव पेशेंस टिल लास्ट मिनट। एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डोंट मिस द सिंगल सेशन। अभी प्योर थ्योरी सेशंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राइट डाउन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. Particulars rupees, particulars rupees. Then you have balance sheet
as on 31st March 2022. 22 ही है ना, sorry. This is 22. Liabilities, rupees. Assets, rupees. Next, one by one account. Here you have important account in beta. Working note 1, statement of affairs. Statement of affairs as on 1st April 2021. 8 lines. Working note 2, line by line. Equipment account. Working note 3, after equipment account beta. Next is debtors account. 6 lines. Working note 4, creditors account. Working note 5, creditors account 6 lines. Cash account, half page, 8 to 10 lines. बैंक लोन की जरूरत नहीं है, नहीं तो बैंक लोन, चलो बैंक लोन भी बना लो. वर्किंग नोट 6, बैंक लोन अकाउंट. ओके, चलो ठीक है. ड्रॉ फास्ट. प्लीज ड्रॉ बाय पेंसिल एंड स्केल बेटा. मेरे जैसा हाथ से ड्रॉ मत कीजिए. बैंक लोन अकाउंट. चलो स्टार्ट. ये तो हाथ से नहीं. चलो स्टार्ट. बिल्डिंग.
बिल्डिंग, इनर कॉलम क्लोजिंग बैलेंस शीट 3 lakhs बैलेंस शीट में, एंड बिल्डिंग आउटर कॉलम 3 lakhs. Equipment 4,80,000 and 2 balance brought down 4,80,000. क्लोजिंग बेटा पेंडिंग रखेंगे, क्लोजिंग पेंडिंग रखेंगे, क्लोजिंग पेंडिंग. फर्नीचर 50,000. इनर कॉलम बेटा लेस डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का आएगा, एंड फर्नीचर इनर कॉलम 50,000. लाइन बाय लाइन जाना है. क्लोजिंग डेटर्स 2 lakhs. ओपनिंग डेटर्स वी आर नॉट अवेयर, क्वेश्चन मार्क है. सो डेटर्स 2 balance brought down and last line buy balance carried down 2 lakhs. Creditors opening balance we are aware, buy balance brought down 1,30,000, but 2 balance carried down not known. So creditors on the liability side, opening balance sheet 1,30,000, and closing balance sheet only we will write creditors, but amount is not known. Creditors. Stock ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट नोन, सिर्फ स्टॉक लिख के छोड़ दिया, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट स्टॉक 1,40,000. क्लोजिंग बैलेंस शीट 1,40,000. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2 ओपनिंग स्टॉक not known, and by closing stock 1,40,000. Bank loan on the liability side, closing 70,000 and opening bank loan opening 90,000. ऊपर लिखना था, सॉरी. बैंक लोन 90,000 अबव क्रेडिटर्स. सेकंड इफेक्ट, अकाउंट ओपन किया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 70,000. बैंक लोन. कैश 2 balance brought down 1,20,000 and buy balance carried down not known. Similarly, closing balance sheet cash amount blank and opening balance sheet cash 1,20,000. Many missing figures are there. Collection from, now line by line question. क्वेश्चन में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट में, टू डेटर्स 7,60,000 एंड डेटर्स के क्रेडिट में सेकंड लाइन बाय कैश 7,60,000. पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के डेबिट में टू कैश 5 lakhs
and by creditors 5 lakhs on the second line. एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंस अकाउंट बनाया था क्या हमने? चलो वर्किंग नोट 7, एक्सपेंस अकाउंट भूल गया मैं, एक्सपेंस अकाउंट बनाना भूल गया. टू कैश 80,000, एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में टू कैश 80,000 एंड सेकंड इफेक्ट, यस बेटा, सेकंड इफेक्ट, यस यस बेटा, एक्सपेंस अकाउंट ओपन करना है. बाय एक्सपेंस अकाउंट 80,000 एक्सपेंस पेड. ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बेटा अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं ड्रॉइंग्स, बिकॉज कैपिटल अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, सो पेंडिंग रखते हैं, ड्रॉइंग्स को पेंडिंग रखेंगे. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड P&L के डेबिट में आफ्टर 3 लाइन्स टू डिस्काउंट अलाउड, आफ्टर 3 लाइन्स एंड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट अलाउड 11,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 9,600. डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट अलाउड 11,000 एंड क्रेडिटर्स के डेबिट में टू डिस्काउंट रिसीव्ड 9,600. Okay, so we have completed till only drawings का बाकी है. One of the equipment sold, so here one of the equipment sold, so equipment के क्रेडिट में बाय कैश 30,000, by loss 10,000. P&L के डेबिट में टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 10,000 एंड कैश के डेबिट में टू इक्विपमेंट sold, two equipment sold 10,000. Okay, अभी इक्विपमेंट अकाउंट में बेटा सी इक्विपमेंट अकाउंट 5,44,000, शुरुआत में कितना था? Yes, so we have to prepare that working note. Purchase of equipment, working note 7, sorry 8, working note 8, purchase of equipment is equal to, कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस एडिशंस माइनस सोल्ड. ओपनिंग कितना था? ओपनिंग इज 4,80,000. Additions we are calculating. Sold 30,000 and closing 5,44,000. So 480 minus 30, 450, 544 में से माइनस करेंगे.
सो एडिशंस बेटा 94,000. Additions 94,000. Additions to cash 94,000. To cash 94,000. एंड कैश के क्रेडिट में बाय इक्विपमेंट 94,000. इमीडिएटली बाय डिप्रिसिएशन 480 में से 40 गया. सो इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन कितना है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अभी आईसीआई ने एक ही से का ना, आईसीआई ने 1,04,000 लिया है क्या 94,000 लिया है? एक बार चेक करने दो मुझे. एक ही सेकंड. एक ही मिनट. आईसीआई के आंसर के हिसाब से जाता हूं. नहीं, अभी आईसीआई ने यहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ कर दिया. आईसीआई ने इधर गड़बड़ कर दिया मुझे लगता है. सो सेल्स की वैल्यू निकालते टाइम नाउ देयर आर टू थिंकिंग्स. सो मैं दोनों थिंकिंग आपको बताता हूं. So this question can be solved in two ways. I will go by ICI way, but if I solve by using another ये, तो सोल्ड की फिगर 32,000 है. सोल्ड की फिगर 30,000 है. सो दिस इज एसएस आंसर. एंड आईसीआई का क्या है देखो. आईसीआई इज टेकिंग 5,44,000 प्लस 4,80,000 प्लस एडिशंस and sold 40,000. Book value they deducted. Okay. So ICI ने ये ऑप्शन लिया है. I am taking selling price. ICI is taking book value. सर कैसे समझेगा? बाकी क्वेश्चंस में तो सेलिंग प्राइस लिया है. Yes, according to suggested answer, I am taking the way. But if you ask me, it is 94,000. ठीक है. So additions as per ICI is 1,04,000. I will change my answer according to ICI. So suggested one. So मेरा तो दोनों options are correct. 94 and 1,04,000. कैसे समझेगा सर? नहीं समझेगा. Now which way बेटा? नसीब.
1,04,000 I will take as per ICI suggested answer. Suggested, beta. As per suggested answer, 1,04,000. If I write selling price, तो my answer will be 94. So क्या लेना है मुझे कहां से समझेगा? नॉर्मली तो हम लोग सेलिंग प्राइस ही लेते हैं. चलो कोई दिक्कत नहीं. So depreciation rate 10% and 1,04,000 पे 10% into 6 months. So my depreciation will be 4,40,000 into 10% and 1,04,000 into 5%. So my depreciation one lakh 4,000 into 5%. My depreciation will be 49,200. 49,200. And I will write buy balance carried down also over here. Yes, beta, I do not have any other option. जो ICI का आंसर है वही मुझे लेके चलना पड़ेगा. But if you ask me 5,94,000 will be the answer. If you ask me personally. $494,800 and 5,84,000. So equipment account. Equipment account. $4,94,800. And depreciation will write afterward to depreciation. Building, equipment, furniture. So बेटा इक्विपमेंट का कितना लिखा हमने 49,200 इनर कॉलम 49,200 लाइन बाय लाइन जाएंगे. So depreciation you can write the pro forma and buy balance carried down. We have completed equipment adjustment. First adjustment over. Sales, purchase and sales pro forma. So two purchases. Cash, credit. Buy sales, cash, credit. So purchases 1,30,000, 5,20,000. Total 6,50,000. Here it is 1 lakh. Credit 9 lakhs, total 10 lakhs. Total 10 lakhs, cash and credit. So cash to sales and buy purchases. To sales, beta, 1 lakh and buy purchases 9 lakhs. Debtors च्या डेबिटला टू सेल्स 9 lakhs and creditors के क्रेडिट में buy purchases 5,20,000. Even buy purchase cash, sorry, not 9 lakhs. Sorry, गलती से लिखा 1,30,000. सॉरी गलती से लिखा. कैश के क्रेडिट में बाय परचेसेस 1,30,000. डेटर्स के डेबिट में 9 lakhs एंड क्रेडिटर्स के क्रेडिट में 5,20,000. एक मिस्टेक हो गया था. कैश अकाउंट क्रेडिट साइड 1,30,000. कैश अकाउंट क्रेडिट साइड 1,30,000. चलो 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 फास्ट.
ओके चलो नेक्स्ट, बाय परचेस हो गया, फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड, थर्ड ओवर, फोर्थ, फिफ्थ ओवर। जीपी, जीपी कितना कैलकुलेट किया? 2 lakhs। सो 2 GP, 2 lakhs, and by GP brought down 2 lakhs। इक्विपमेंट सोल्ड कितना लिखा था मैंने? ओ ओ ओ सॉरी, इक्विपमेंट सोल्ड को 30,000 करो। हाँ यस, थैंक यू बेटा प्रणय। यस यस यस, इक्विपमेंट सोल्ड 30,000 इन कैश एंड 10,000 लॉस। यस वेरी गुड बेटा। मेरा फोकस हिल गया क्या? ओके नहीं सॉरी, कैश के डेबिट में 30,000। यस थैंक यू मोहम्मद असलम, थैंक यू बेटा। कैश के डेबिट में 30,000। सो रेक्टिफाइड माई मिस्टेक्स, थैंक यू गाइज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000। सो एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में टू पेएबल, टू पेएबल 6,000। सेकंड इफेक्ट, second effect liability side, second effect liability side expense payable 6,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स को थोड़ा नीचे लिखता हूं। ओके एक्सपेंस पेएबल भी हो गया। हाँ नाउ कैपिटल ऑफ स्टीवी इज 30,000 मोर देन कैपिटल ऑफ एलिसिया। ठीक है देखते हैं, 31 मार्च 2021 दैट इज ओपनिंग कैपिटल। देखते हैं देखते हैं, चलो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 2% and furniture less depreciation 10%, 5,000, 45,000, 2% बेटा 6,000, so 2,94,000, 2,94,000 and 5,000, so 6,000 लीजिए बिल्डिंग depreciation and 5,000 furniture, so 6 plus 5 plus 49.2, 60,200, 60,200। ठीक है नाउ बेटा वन बाय वन, यस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ओपनिंग स्टॉक 11,40,000, नंबरिंग दीजिए 11,40,000 माइनस 650 माइनस 200, सो 2,90,000। सेकंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट 2,90,000, ओपनिंग स्टॉक 2,90,000, 2,90,000 करेक्ट है? ओके नाउ डेटर्स, नंबर 3 पे डेटर्स वी विल क्लोज। सर सीक्वेंस तो बाय एक्सपीरियंस ही आएगा, 760 प्लस 11 प्लस 200 9,71,000 minus 9 lakhs, so this is 71,000। so बेटा
debtors number 3 and number 4 in opening balance sheet. Opening balance sheet 71,000. चलो debtors closed. Creditors beta, you can easily close 130 plus 520, 650 minus 596. Sorry, 650 minus 500 minus 9.6. Creditors 1,40,400. Number 5. Creditors number 6 closing balance sheet 1,40,400. Cash beta wait. Bank loan to cash 20,000. पर बैंक लोन का इंटरेस्ट नहीं है अभी, वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. बैंक लोन इंटरेस्ट इज नॉट अवेलेबल. सो कैश के क्रेडिट में बाय बैंक लोन. So beta, this is 7 number. This is 8. By bank loan in cash account credit side 20,000. Cash account के credit side में 20,000. Expenses beta by P&L 8 हो गया ना, 9. 8,60,000. Sorry, 86,000, not 8,60,000. This is 86,000. 9 number. And to expenses on the first line, कितना number था? 10. 86,000. Okay. Now 11 number, capital account. 300 plus 480 plus 50 plus 71 plus 290 plus 120. 13,11,000 minus 90 minus 130. 10,91,000. कैपिटल अकाउंट 10,91,000 एंड 12 नंबर पे अभी कैपिटल ओपनिंग बाइफर्केशन. What is given in the question? Capital of Stevie is 30,000 more than the capital of Alicia. Okay. So Stevie's capital is equal to Alicia. क्या नाम है बेटा, कहां से आते हैं ये लोग? Alicia capital plus 30,000 बराबर है. तो can I write it as Alicia capital plus Stevie's capital is equal to बेटा 12 नंबर पे कितना था? 10,91,000. 10,91,000. Can I write it as Alicia capital plus Alicia capital? Now this is replaced. Plus 30,000 is equal to 10,91,000. So Alicia capital कितना हुआ? 2 Alicia capital is equal to 10,61,000. Therefore Alicia capital कितना हुआ? Alicia capital is equal to 10,61,000 divided by 2, 5,30,500.
5,30,500 एंड देयरफॉर कौन थी रे वो दूसरी, क्या नाम था यार, स्टेवी, अपने इंडियन लेने के नाम। ओके, 5,60,500 ओपनिंग कैपिटल का बाइफर्केशन। सो ओपनिंग कैपिटल बाइफर्केशन आई गॉट, यस, कैपिटल पहले कौन थी, स्टेवी, स्टेवी, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट। ये उसका कुछ तो बाकी है ना, पेंडिंग है। व्हाट इज पेंडिंग, ड्राइंग्स, स्टेवी का ड्राइंग्स भी है, ड्राइंग्स एंड कौन थी दूसरी, एलिशिया, ओपनिंग एंड प्लस प्रॉफिट। सो ओपनिंग कितना था, एलिशिया 5,30,500 और इसका था 5,60,500 एंड ड्राइंग्स कितलो छे, ड्राइंग्स था ना स्टेवी का, ड्राइंग्स ऑफ स्टेवी 60,000. सो माइनस 60,000 कॅशच्या क्रेडिटला बाय स्टेवी, बाय स्टेवीज ड्रॉइंग 60,000. Okay, now buy balance carried down. Last one, 13 number. So 13 number we are going to write it now. 12 का इफेक्ट दे दिया मैंने, 120 हो गया पूरा, 2 मिनट बस। 760 प्लस 30 प्लस 100, 10,10,000, 10,10,000 माइनस 500 minus 80 minus 104 minus 130 minus 20 minus 60, 1,16,000 and 1,16,000 फिर किधर आएगा रे बेटा, 1,16,000 14 नंबर बैलेंस शीट में। चलो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड डिवाइड इट इक्वली। चलो 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 हो गया, 2,09,600, 2,09,600 माइनस 60,200 माइनस 86,000 पहले तो, देन 11,000 माइनस 10,000 एंड 60,200, 42,400, 42,400 इक्वली डिवाइड करो, 21,200, 21,200, 521,700, 5,09,300 and let's check the total. 700 plus 70,000 plus 1,40,400 plus 6,000, 12,40, 521.7 plus 509.3, ओ ऐड करना था, सॉरी सॉरी, ऐड करना था, 530 प्लस 21.2, 551,200, सॉरी ऐड करना था, गलती से लेस कर दिया, प्लस 521.7 प्लस 70 प्लस 140 प्लस 6.4, ओके, 12,89,000। क्या चल रहा है यार, 551,700
5 plus 21.2 plus 521.7 plus 70 plus 140 plus 6 12,89 किधर गलती हो रहा है रे 551.7 plus 70 plus 140.4 plus 6 12,89,800 आ रहा है क्या अभी minus 294 minus 45 minus 494.8 minus 200 minus 140 minus 116 yes 12,89,800 it's telling figure so what is new in this बेटा नया क्या था इसमें नया क्या था only one important point बस पेशेंस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ओपनिंग कैपिटल का बाइफर्केशन ओपनिंग कैपिटल वर्किंग नोट 12 जो 12 नंबर का मैंने दिया था नॉट वर्किंग नोट 12 कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग सो दिस इज अ न्यू पॉइंट थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस 950 हो गए अरे बाप रे आज तो बहुत बार देर ले लिया सो 950 हो चुके हैं और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल भी होप्स मत छोड़ना एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली फॉर इक्विपमेंट तो वो तो अभी कुछ नहीं कर सकता हूं मैं जो आईसीआई का आंसर है वही पर इफ यू आस्क मी 94,000 आंसर होना चाहिए था तो चलो मिलते हैं फ्राइडे को अभी फ्राइडे को मिलेंगे एकदम नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके सो टिल दैट टेक केयर बाय बाय थैंक यू चलो बाय